अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स। और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो चैप्टर नंबर 12 के नाम से है। फर्स्ट चैप्टर के जो हमने टॉपिक्स अब तक किए हैं वो है 12.8 तक। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं 12.9। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द टॉपिक नंबर विच इज़ आल्सो आवर लेक्चर नंबर 12.9। सो द नेम ऑफ टॉपिक इज़ electric potential। ओके डियर लर्नर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट अस कंसीडर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज जो है क्यू नॉट है। उसको हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप जो है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो अपना एप्लीकेशन की थी गाउस लॉ की, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज मेटालिक प्लेट्स के दरमियान हमने सीखा था। आज हम वही मेटालिक प्लेट्स लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो नेगेटिवली चार्ज को हम मेटल पॉजिटिवली चार्ज को हमने प्लेट बी कह दिया और नेगेटिव चार्ज को हमने ए कह दिया। हमें पता है कि जब हमने इस प्लेट को, दो प्लेट्स को जब ऑपोजिटली चार्ज किया है तो इनके दरमियान एक यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो डेवलप होती है, जो रेडियली आउटवर्ड यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जो है वो जारी होती है। सो द फील्ड इज आउटरवर्ड विच इज रेडियली टूवर्ड्स द negative field, negative plate. Okay, so let's suppose if we put a charge, point charge here, say this is Q naught. Okay, this is a point charge Q naught which is a plus charge, positively charge जो है यहाँ पे हमने टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है। अगर इसको हम इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट डिस्प्लेस करता है, ये पॉइंट मूव करेगा जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर ये आप कंसीडर कर ले, ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे छोड़ो तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट ने यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको आप बी कह लें, इसको आप ए कह लें। तो अगर आप इस पॉइंट मार्कर को इसको कंसिडर कर लेंगे, दिस इज द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज। अगर इसको छोड़ते हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये मूव करेगा। सिमिलरली बच्चों, ये पॉइंट चार्ज जो है अगर इसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है विद इन द प्लेट्स, उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स एक्चुअली क्या होगी बच्चों, वो फोर्स होगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इक्वल होगी क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोडक्ट ऑफ charge and electric field intensity. Okay, if you want to move this point charge from the plate A to plate B against the electric field, अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ से आप कह लें बॉटम जो है पॉइंट नेगेटिव प्लेट का, यहाँ से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो टूवर्ड्स द प्लेट B, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करूंगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसकी कोई ना कोई हाइट है, इसका कोई ना कोई मैस है, ठीक है बच्चों, और इस पे लगने वाला कोई ना कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के mgh थ्रू दिस हाइट। सिमिलरली जब मैंने इस पॉइंट चार्ज को मूव करना है तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन एक्चुअली मेरे पास आएगा डिफरेंस ऑफ द टू पोटेंशियल एनर्जीज के। तो वो वर्क डन बच्चों होता है एक्चुअली डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज था, यहाँ से मैंने इसको मूव किया है अपवर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मुझे उस पर एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी, फोर्स लगानी पड़ी, कोई ना कोई उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और हम कहते हैं जी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हुई।
ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स. द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी राइट UB and initial final potential energy, the energy at the plate A is UA, the potential energy at B is UB. So this is a difference which is equal to the work done to displace the charge to move the charge from plate A to plate B against the gravitational force. Okay, हम ये जो change in energy आ रहा है actually ये due to the potentials है, potential at point A and the potential at point B, mean to say the potential across the two metallic plates. So this is actually, this is a change in potential, this is the change in potential. So वो potential हमारे पास क्या है, वो similarly जो potential है वो V की फॉर्म में हम लेंगे अब, VB minus VA. Actually this potential is electrical potential. So this is electrical potential at B and A respectively, but this is a difference. So this electrical potential appear what? This electrical potential is the work done in bringing a unit positive charge. Actually this is the work done in bringing a unit positive charge, work done on a unit positive charge to displace that unit positive charge from terminal or plate A to B against the electrical field, electrical potential. Okay, so now this potential actually equals to this potential is actually equal to electrical potential. So हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये दो पॉइंट्स के दरमियान, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह, ये सिंपल एक पोटेंशियल है. एक्चुअली दिस इज एक पोटेंशियल है और इसमें हमने क्या करना है, हमने उस बॉडी को, उस पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करना है. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली इज दैट, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम लिखेंगे. तो ये किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास है डेल्टा यू के इक्वल. तो यहां पे अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, क्योंकि वर्क हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए हमने इसके इक्वल से पुट कर दिया. अगर आप बच्चों यहां से डेल्टा यू जो है अगर निकालना चाहो, इट इंप्लाइज दैट डेल्टा यू विच इज अ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टाइम्स charge, and you know that this is the work done, this is the work done. It implies that आपके पास work done across the plate AB should be equal delta V into Q naught. तो आपके पास ये डेल्टा V into Q naught की फॉर्म में आ जाएगा. ओके, सो यहां से आप जो है ये आपको पता है 1 जूल के इक्वल होना चाहिए. ओके, सो 1 जूल के इक्वल होना चाहिए. तो इट मींस दैट कि आपके पास जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 वोल्ट के. यानी कि हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा V इक्वल डेल्टा WAB ओवर Q नॉट. ठीक है, सो दिस इज अ जूल पर कूलम. The SI unit of work is or energy is joule, and your unit of the electrical charge SI unit is coulomb. So what does it mean? It means that our 1 volt it actually equal to joule per coulomb. Joule per coulomb, this is the SI unit of the electric potential. So 1 volt will be equal to, if 1 joule of energy is required to move, if 1 joule of work is done to move a point charge from a reference point to the some other point. Reference point to mean to say कि point of infinity से some reference point, या आप एक point से दूसरे point तक move करते हो. This is the 1 joule energy or 1 joule work done in
displacing, in moving, in bringing a unit positive charge from one point to another, or if you consider that point where we want to displace the point charge, and from where you are displacing that point, if you consider the point where the point चार्ज इज प्लेसिंग राइट नाउ इज एट इन्फिनिटी, वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है और हमने उसे एक पॉइंट के ऊपर लेके जाना है बी के ऊपर. सपोज आप ये कह लें कि ये पॉइंट जो है हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है. यहां से यहां तक अगर आप पॉइंट चार्ज को मूव करते हो, इट मींस दैट पॉइंट इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी आपके पास ये जो टर्म है, इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, तो एट इन्फिनिटी बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इन्फिनिटी में हम इस टर्म को जो है निगलेक्ट कर देंगे. डेल्टा वी इक्वल वी बी माइनस क्या है वी ए. ये जो हमारे पास वी बी माइनस वी ए आ रहा है, इस वी ए क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर है, इस पॉइंट को हम निगलेक्ट करते हैं तो आ जाता है वी बी इक्वल डब्ल्यू ए बी विच इज अ वर्क डन बिटवीन द टू मेटेलिक प्लेट्स. सो जर्नलाइज अगर करें हम, सबस्क्रिप्ट से बी खत्म करें तो v इक्वल क्या आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो दिस इज द मेन actually our aim, and this is a statement of the actual statement of the electric potential, which says that if you do some work on a unit positive charge to displace across the 2 points, then it should be equal to electrical potential or electric potential. So electric potential, actually for the sake to find out the electric potential, you will have to maintain the equilibrium position, you will have to point the, or you will have to displace the point in equilibrium potential. Okay, so equilibrium mean to say that कि आपने उसको मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, you will have to move that point with equilibrium or uniform velocity. Okay, your velocity should not be changed, you will have to move the point with uniform velocity, your equilibrium should be maintained while displacing the charge infinity to that point or one point to another point. Okay, so that is the main point. When you do some work in bringing a unit positive charge from infinity to some reference point or from one point to another, so you would have to do something. You should take the charge, you should keep the charge in equilibrium, or you can say that you should move the charge with uniform speed, uniform velocity. Okay, so now if you talk about what is the nature of the quantity electric potential, either it is a vector quantity or a scalar quantity. So you can see that work is a scalar quantity, and coulomb, which is electrical charge, is also a coulomb scalar quantity. So it means that you have a ratio of two scalar quantity, it means that the resultant should be scalar. So the V, which is electric potential, is also a scalar quantity. Now let's see the subtopic of this chapter, which is named as electric field as a potential gradient. We will start from here, and actually this is a subtopic which is named as electric field potential gradient. Electric field as a potential gradient. Potential gradient. So electric field as a potential gradient कब behave करेगी, और what is a potential gradient? Let's see. Actually we will start this nomination, this whole criteria from using this equation, that main equation where WAB is circled. हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही इक्वेशन को, जो बेसिक इक्वेशन है बच्चों ये वाली, इसी को हम यूज़ करेंगे और इसी को यूज़ करके जो है हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द actually what is the electric field as a potential gradient. So let's see, using again delta V equal work done between two points which is on a unit positive charge. You know that this is VB,
This is a potential at point B, and this is a electric potential difference at point A, which is equal to AB over Q naught. Okay, so students, you know that when you do some work, it does mean that AB is equal to F into D. This is the definition of the work done in mathematical notation. But you know that the one thing is that where F is the electrostatic force. Electrostatic force means that actually you are doing some force, you are applying some force against the electrostatic force. So this is your actual force which you are applying to force a charge, which is opposite to the electrostatic force. And you know that electrostatic force, if this is the equal to and opposite to the electrostatic force, it means that you have to write here Q naught into E into D, and with this you will have to write the negative sign, negation sign, which shows that actually the force must be applied to Q naught E, actually keeping the charge in equilibrium. It is against the electrical field. Okay, it is against the electrical field. It is a force to move the potential to move the point charge against the electrical field, keeping the charge in equilibrium position. Okay, so let's see what is the consequence of this result. And we are actually, the result is pretty good. And if you want to find out the result of this equation, you will have to write something in new sense. The something in new sense is that you will have to write the equation again and again in form of this. Okay, so VB equals VA equals, put the value of this into the above equation, actually replacing WAB by minus Q naught E into D over Q naught. Now you can see that in this equation the numerator denominator same will cancel out, and you know that what the one thing is remaining, the remaining thing is that this is the delta V. Okay, so actually this is a delta V. It means that you can write this as a delta V is equal to minus E and D. Now this is the equation. If you want to replace this equation, I'm gonna to write here equals E equals, okay, here is the E equals, the minus sign should be transferred to the other side, and D is multiplying by E, which is electric intensity, and by going to another side it will be minus delta V over D. Okay, so the quantity, actually this is the quantity, this quantity, what does it mean? Actually, what is the significance of this quantity? This quantity will give the maximum rate of change of potential with the distance. This is the actually whole distance. This is D. This is actually complete distance. Okay, but you know that what if you want to put something, if you want to pick up something, or if you want to take something from ground floor to the 7-story building, to the top of the 7-story building, you are going through the stairs. Okay, now you are ascending the stairs, and you hold some weight in your hand, and going upward and upward and upward, one story to another story, one story to another story, your weight becomes higher and higher. You're feeling your feet more heavy. Okay, you feel heavy at the bottom, and you will have to put more and more energy, you will have to utilize more energy, you will have to push yourself more and more. What does it mean? It means that actually your energy is gradiently increasing, your potential against the gravitational field, against the gravitational force increasing. Actually what does it mean? It means that actually our gravitational force, which is equal to work done, which is equal to gravitational potential energy, or potential energy is equal to mgh. These two quantities, if you take these two quantities constant, but your h is not constant, this is the actual delta h. You are increasing your h, you are increasing your height. So as more you go upward, more you go higher, more is your potential energy, so more the work you will have to do. Okay,
So same sense is here, same sense, you can make the same sense in this diagram. If you displace the point charge from here and you are moving upward, so gradually you will have to do more and more work, you will have to consume more and more energy while ascending, okay, while going upward from here, here, the potential increasing gradually. Actually this change in potential is actually the gradient. This is the gradient, and by changing the d by delta r, here r is a point to point displacement. The point displacement, say r1, say r2, say r3, and so on. So difference between the 2 points should be delta r, which is actually increasing gradual distance, gradually increasing distance, gradually increasing footstep upward inside the electrical field, same like the in gravitational potential field. So E will be increasing, actually work done is increasing, it means that. So you can replace this term d by delta r. Okay, if you replace this term minus delta V over delta R, so this is the potential gradient. Actually this is the electric field as a potential gradient. This is the actual formula of the potential gradient in electric field, or electric field as a potential gradient. Okay students, you can see at the bottom of your textbook at page number 16, one proof that 1 volt over meter is equal to Newton per coulomb. So I'm gonna to do this here. I'm gonna to prove this small derivation. There will be chances that it can come, there is a probability that it can come into your short questions. Actually we will have to prove that 1 volt over meter is equal to 1 Newton per coulomb. We will have to prove that, okay? Prove that. This is a simple and smallest proof at the end of the topic. Okay, 1 volt, you know that what is volt? We have already defined here. Okay, what is volt? Volt is a joule per coulomb. So you can write here joule per coulomb. Okay, and you know that what is joule? This is a work done, and you know that work done is force. Okay, force for Newton, and meter, this is a distance FD, which can be written as meter, and over here is a coulomb. Okay, this is the actually this is a Newton meter, and actually you are forgetting something. Actually I'm forgetting something. I should write like this, coulomb, and I should write here meter. Actually volt is joule per coulomb. Volt is a joule per coulomb, which is a numerator quantity, and in denominator we have meter. So I should write here meter, and coulomb will be come into the denominator. Okay, ratio by ratio, it will come into the denominator form. So what is joule? Joule is a work done, which is Newton meter, and you can cancel the meter by meter, and definitely it's a pretty someone that you can get the required proof. You can prove this term, and you can say that proved. This is equal to 1 Newton per coulomb. This is a small proof, you can do yourself. It's quite easy, not difficult, not complicated. Okay, we have taught till now the two things, which is electric potential and electric potential or electric field as a potential gradient. So it's a quite simple and not difficult. So you must do the whole derivation and this last mini proof.